Good morning, Dr. Aman. Good morning, ma'am. Good morning, Nice Dr. to see Meena. you. Yeah, it's wonderful to be with you. Thanks Thank you for for the joining. invitation. It's pleasure to have you. Thank you, ma'am. So, all uh, Madam remember, Rupinder Kaur, kindly. Yes, ma'am. Ma'am, should we wait for another 2 minutes? There are a few yeah, people sure. ready to join in. Okay, Okay, sure. okay. By 11 we will start. A very good morning, ma'am. Good morning, Dr. Rupinder. How are you? I'm good, ma'am. How are you? Thank you for the invitation, Dr. Neena and Dr. Rupinder. It is pleasure to be with you all and Pleasure is sharing all my ours, ma'am. thoughts. Thank you so much. Thank you. Okay, ma'am, should we begin? Yes, Hello. start. Yes, Yeah. please. There's someone in the waiting room. Okay, right. Okay. So, a very good morning, everyone. Well, the NSS unit of Gobindgarh Public College, Alor Khanna, which is a multi-faculty institute recognized under 2F and 12B of UGC and affiliated to Punjab University, Chandigarh. We welcome you, every one of you, on board on the 5th day of 8 Days Women Series. Well, ladies and gentlemen, I believe the progress of any society depends on its ability to protect and promote the rights and interests of its women. Property rights and other economic rights offered to women under different status in India are quite complex, and the issue further gets perplexed after their marriage since they become part of a new family. Well, to deliberate upon this subject, women and property rights, we have amongst us Dr. Aman Amrit Chimaji from the University Institute of Laws, Punjab University Regional Center, Ludhiana. Ma'am, we extend a warm welcome to you. I also welcome Madam Dr. Neena Seth Pajni, Principal, Govindgarh Public College, Alor Khanna, and also the convener of this 8 Days Women Series. I extend my heartiest welcome to all the distinguished learners and faculty from various academia of repute and also dear students. Well, to proceed further, I invite Madam Dr. Neena Seth Pajni ji to formally introduce the resource person of the day. Over to you, ma'am. Thank you, Professor Rupinder Bangera. And nice to meet you virtually, ma'am, Dr. Aman Amrit Chimaji.
Thank you. Today is the 5th day of our women series to promote women and femininity, and we have 25 total participants here, and mostly the participants are teachers and some are housewives also. I'm thankful to them. कुछ लेडीज ने भी हमारे साथ ज्वाइन किया है बाहर से, Okay. हाउसवाइफ्स, और वो भी इसका पार्ट बनना चाहती हैं। और पार्टिसिपेंट को मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ हमारे रिसोर्स पर्सन से, जो डॉक्टर अमन अमृत चीमा जी हैं। वो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर लुधियाना में। By qualification, she is gold medalist in LLM from GNDU Amritsar, PhD from University of Jammu on topic the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, a socio-legal study with a special reference to state of J&K and Punjab. Ma'am, this is a very interesting and socially relevant topic. I congratulate you for taking this. And she has supervised 11 LLM dissertations and 2 PhD students. And at present, she is also serving as coordinator of legal aid camps at Kisan Melas, organized various educational tours to the Supreme Court of India, Central Jail, Women Jail, Observation Home for Juvenile, etc. मैम, इसको देख के मुझे एक हमारी एनएसएस यूनिट बहुत एक्टिव है और बेस्ट एनएसएस यूनिट का अवार्ड भी मिला है, तो ये बहुत मुझे यूनिक लगा। मे बी ये आपके प्रोफेशन में आता है, पर जनरली हम डिग्री कॉलेजेस में इस तरह के टूर्स ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। तो काइंडली हमें ये भी बताइएगा कि क्या हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स भी यहाँ पे कुछ सीख सकते हैं या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस तरह के, अगर हम भी टूर्स एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवाएं। And ladies and gentlemen, it's honor for me to tell that she has served coordinator and advisory member of various prestigious bodies and academic and technical bodies, and has authored 2 books and published 31 research papers in national and international journal of repute. उनकी जो ज्यादातर पब्लिकेशंस है वो वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट के ऊपर ही हैं। And she presided over as a judge in the moot court debates and chaired various technical sessions of conferences and workshops. And जो आपका स्पोर्ट्स के लिए प्यार है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। और इसीलिए शायद आपने एक बुक भी लिखी है, एंड इट्स ऑनर टू हैव यू हियर मैम। एंड बहुत से मेरे जो जानकार हैं उनकी आप फेवरेट टीचर हैं, मैं आपको बता देती हूँ, और उन्होंने कहा है हमारा रिगार्ड दीजिएगा। Okay, didn't know this. Thank you. Very pleasant smile you have, and over to you. Thank you. हमारे मिक्स हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो जितनी सिंपल लैंग्वेज एंड उसमें आई विल अप्रिशिएट। Okay. All right. I got it. Thank you so much, Dr. Neena, for the beautiful introduction. I would rather say that this has been one of the most beautiful introduction and awesome introduction I have ever had, where you have that human touch also. It's not that you just read it from the paper and that's it, but you gave that human touch to it and you had your own peace of mind to it, and that was wonderful and marvelous. I'm really very elated and happy to be part of you all. Well, yes, as we also hold, we take the students for the field work. The colleges too can take the students for field work. No doubt we have to take the permission from the administration, like when we took children to observation home, we had to take the permission, but they do allow. And for central jails also, or for any other field activities, just the permission is required. So you too can, with your students, go for it. And in any case, you wish to have any sort of support from me, I'm always there for you all. Thank you so much. And it's also wonderful to hear that along with the teaching faculty, you have
housewives, you have people who are not truly associated with your institution. That's a wonderful initiative. Rather, I would say we do not go into that field. We lack in that. If in case we have some programs that are for the faculty and the students, and hardly general public joins. Yes, in case we have seminars and things like that, then in that situation, but for webinars, I have never come across any general public joining on their own. And I must congratulate both of you for this wonderful initiative that you have taken. I'm really happy to be part of you all today. Thank you so much. Okay, so in case I have the permission of the chair, I would start with my presentation. I'm kind. Okay, so I will share my presentation. Please do let me know if whole screen is visible to you for one slide, or all the slides are visible to you. All are visible, ma'am. Okay. Okay, then I'll use the slideshow. Okay. No, it's okay. Perfect. Right. Well, sorry. As Dr. Rupinder has already enlightened you that my topic is women and property rights. And I have used the term from inequality to inequality. Why I have used this term is that to bring women at par with men for property matters, in property matters, they have in turn legally made the law inequitable as far as men are concerned. Now inequality stands in favor of the men and not women. That I would make you understand that when we get into the further discussion. Now Jawaharlal Nehru himself stated that the status and social position of women, they indicate the country's progress more than anything else. We all agree on this point, that it is the status and social position of women from where we can guess the progress of any given society. Now, introducing you to the point of discussion is that women has always been the center of study from the ancient to the modern times. Ancient time में भी उनके बारे में पढ़ा जाता था, उनके बारे में समझा जाता था. अब किस तरीके से समझा जाता था वो हम डिस्कस करेंगे. सो उस समय भी समझा जाता था, उस समय भी उनके बारे में बोला जाता था, कहा जाता था, आज भी उनके बारे में स्टडी चल रही है. She has been branded as a mysterious creature. मिस्टीरियस, आपकी डेली डिस्कशंस में भी आप बहुत बार बात करते होंगे, क्योंकि उसके माइंडसेट में पता नहीं क्या था, कैसी है वो मिस्टीरियस क्रीचर उसको माना जाता है, माना गया है. और बट साथ में इट हैज बीन स्टेटेड दैट शी हैज बीन अ डिवोटेड मदर एंड आल्सो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग वाइफ. Indian society, see, has nearly half of its population as women. Women
Madam Rupinder? Yes, ma'am, I'm calling her. Okay, okay. She got disconnected. That's right. So we were on the introduction portion. While I was introducing that women perform, they nearly perform 2/3 of the work hours, and they just receive one length of the world's income and own less than 1/100th of the world's property. So you can see the state of affairs for women. Now, the position of the women in any given society, it could be understood properly through the agencies of different customs, which the property rights have recognized and protected. Now, right of the woman to succeed to any property, they differ from one religion to another, depending upon the personal laws. Some being codified and some not being codified. कहने का मतलब ये है कि एक लड़की के हिंदुस्तान में एक लड़की के क्या प्रॉपर्टी राइट्स है, ये डिपेंड करता है उसके रिलीजन पे, क्योंकि रिलीजन हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल. Even if in the constitution they have made the provision of uniform civil code, but that is not a fundamental right, that's a directive principle. So but abhi bhi customs, क्योंकि पुराने टाइम में जब भी हमने लॉ कोडिफाई किया, हमने लॉ बनाया, दो बंद पुराने टाइम से रहा है, बट इसको लेजिस्लेशन में जब भी लॉ लेके आए, उसमें रिकॉग्नाइज किया गया कि पार्टीज के पर्सनल लॉज, पार्टी के अपने रिलीजियस लॉज क्या कहते हैं. सो रिलीजियस लॉ के हिसाब से कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ की गई, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी राइट्स विमेन को दिए गए. सो आज मेरा डिस्कशन का पॉइंट होगा कि हिंदू विमेन कि प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, क्योंकि मेजरली हम इस एरिया में अगर डील करें तो मोस्टली पीपल आर रिलेटिंग टू हिंदू रिलीजन. आई डू नॉट से हिंदू रिलीजन, हु इज अ हिंदू. अब हिंदू की डेफिनेशन में लॉ में हिंदू में इट इंक्लूड्स सिक्स, इट इंक्लूड्स Jainism, it includes Buddhism, it also includes Arya Samajis. So, क्योंकि they are the offshoots of Hindu religion, right? So, Hindu law is applicable to people who believe or who are the offshoots of Hindu traditions and customs. Now, thanks to this modern government that they have now legislated, and most of the succession laws are codified, but succession, as I told you, is still governed by the personal laws of the party. India as a society and India as a country has come a long way towards the emancipation of women. So it's very important and imperative to understand this concept of gender equality and gradual growth of women's property rights. कैसे ये grow हुआ, क्या situation थी तब ancient time में, primitive time में, और आज क्या situation है. This is important for you be as a society to understand. Discussing about the historical development of women's property rights, I would start from the primitive age. Now, in the beginning stage of human culture, man led a nomadic life. We all know,
every one of us knows that man had a nomadic life, hunting and gathering food from the trees and from the animals. There are no instances at that time to prove that the man dominated over the woman. Men and women had an equal footing at that very time. अगली स्टेज आई जिसमें human being had interest in agriculture and rearing the animals. The women were equal partners with the man, and they were considered equal because both of them were working in the fields as well as rearing the animals. But agriculture आने से एक thought settlement का भी हुआ. पहले nomadic life में मैं आदमी इधर उधर घूमता रहा, बट यहाँ पे जब भी उसने rearing of animals किया और एग्रीकल्चर किया, देन ही विश टू सेटल डाउन. अब जब सेटलमेंट की बात आई तो क्रिएशन ऑफ फैमिली भी आई, and the concept of property also came into existence, क्योंकि उसकी agriculture piece of land became the property. To protect that property, there were frequent fights with one another. ठीक है, ट्राइबल आप मूवीज में भी देखते होंगे, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी. और उसमें मसल पावर that played the decisive role in protecting the property. Naturally, women were physically not as strong as men, so they were given household works. They were to rear the family, they were to take care of the household affairs as well as the children. Mere glance at the lifestyle of the primitive age men and women showed that their equality began to give room for division of labor between them. And their renowned author G.V. Reddy also, in his work Women and Law, he has stated that in primitive stage, women's right of ownership of the property and management were well recognized. In fact, there were several tribes established on the basis of matriarchal system, जिसमें the woman is at the head of the affairs, she is at the helm of the affairs. On the death of the man, his entire property was entrusted to his wife, his mother or daughter, and the surnames also moved with the name of the woman. तो matriarchal system था primitive times में. Women were equally honored in the society. Rather, in certain periods they had priority over the menfolk. Now we step into the ancient time. In the ancient time, this system waned off and the male dominance started. Matriarchal system gave way to patriarchal system. On the death of the man, property started being distributed to sons, fathers, and other male relatives. Now, gradually, these women, they were thrown into the corners and they were made weak and dependent upon males. Now, during wars, the defeated men and women and their property were handed to the victorious. अब पद्मावत आप लोगों ने सबने देखी होगी, उसमें भी आपने देखा होगा कि वॉर का जब भी कॉन्सेप्ट वॉर आया, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसमें जो डिफीटेड, जो हार गए राजा और उनकी रानियां भी, they were considered a property and they were handed over to the victorious. Defeated men and women were considered as slaves, having no political, social, and economic rights in the society. Now, just as houses, lands, etc., slaves were also considered as property. Gradually, women were considered as property. Here, all her property rights were taken away by men. So in succession, जब भी वो succeed करती थी कि उसके घर में suppose उसके पिता की death होती थी, तो property जो है
घर के जो पुरुष हैं, जो आदमी हैं, उनको प्रॉपर्टी दे दी जाती थी, औरत को लीगल एयरशिप से निकाल दिया गया. Women were left without the property. Matriarchy was destroyed and father began to dominate all the affairs of the family. Politically too, state was governed by men. Now, Hindu tradition though believed in the joint ownership of the household. अगर आप देखें कि हिंदू ट्रेडिशन में जब भी फेरे होते हैं तो वहां पे फेरों में क्या बात की जाती है कि जॉइंट ओनरशिप होगी, घर की जो ओनरशिप है वो जॉइंट होगी, उसकी प्रॉपर्टी जो है हम दोनों जॉइंटली रखेंगे, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, and they take the solemn vows at the time of marriage that he would never transgress upon the rights of the wife even in economic affairs. But that hardly took the shape. Why? Because the rights of women, they were never passed to its logical conclusion in order to secure her a complete absolute equality. जब हिंदू ट्रेडिशन में जॉइंट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है, अब जॉइंट ओनरशिप मींस जॉइंट फैमिली सिस्टम. तो अगर आप देखें तो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप वाइफ की तो बाद में करते हैं, हस्बैंड को भी प्रॉपर्टी आराम से नहीं, इंडिविजुअल राइट नहीं था प्रॉपर्टी पे फैमिली का राइट था. चाहे एक इंसान ने अपनी अर्निंग से प्रॉपर्टी खरीदी है, एक आदमी ने अपनी अर्निंग से प्रॉपर्टी खरीदी है, तो पहले क्या होता था कि प्रॉपर्टी सारी फैमिली की होगी. सो उसमें उसका खुद का रोल बड़ा मिनिस्क्यूल था. अब उसको नहीं मिल रहा तो उसकी वाइफ को तो यू कैन वेल इमेजिन क्या मिलेगा. General circumstances, they were unfavorable to joint family system. The joint ownership of husband and wife, it remained a legal fiction, I would say. Then we come to Vedic age. A Vedic age में social and familial status of daughter was fairly satisfactory. It was good in the early Vedic period. Women were educated like men, and they had to pass through the period of brahmacharya. Now, this is the picture of Maitri. Gargi and Maitri, most of you might be knowing that they were considered sages, the saints, and the philosophers of that time. They proved that education was imparted to women, and some of them attained rare intellectual level. Now, these women, they knew the Vedas and Upanishads as any male Brahmin. They were so very well educated. That's the education given in the Vedic time period. But still, her birth was not received with happiness. Now, this shows the actual position of women. She was always under the control of her husband and his family. Unmarried daughter was under the protection of the father, and when father died, the control was given to the brothers, provided the brother undertook to maintain her. And there are instances where you will see that if the brother said that I cannot maintain her, she used to live on her own. The permanent protection, permanent tutelage that was given to women, that came in the later time. That came during the later time in post-Vedic time. Daughters did not have any right to hold the property. They did not have any right to dispose of the property. But the daughter who was living in the father's house throughout her life, she got a share in his property. However, she could not claim a share with her brothers. That is, in case she had a brother, she did not have a right over the property. Rig Veda itself states that a son born in the family
does not transfer wealth to the sister. Married daughters who were living with the husband, they could not inherit the property of the father in the presence of the brother. Wife had no legal status in respect to property. पहले तो मैं daughter की बात की, अभी wife का भी कोई right नहीं था. She could not hold the property, she could not inherit the property. जो rights उस समय women के पास थे, वो rights सिर्फ maintenance के थे. Joint family system जो हमारा जो joint family, हमारा हिंदू law, उसका base है जॉइंट फैमिली सिस्टम. ये जॉइंट फैमिली सिस्टम का बेस वैदिक टाइम से ही, सोर्स हमारा वैदिक टाइम ही है, वैदिक टेक्स्ट्स ही हैं, श्रुति, स्मृति, उपनिषद, उन्हीं से ही हमारा ये सोर्स बना है हिंदू लॉ का. सो ये कॉन्सेप्ट जो है, उस समय जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए शी कुड नॉट होल्ड प्रॉपर्टी, बट हाँ उसको खर्चा मिलता था, उसको रहने के लिए छत मिलती थी. That's all that was given, but she was not the owner of any property in her name. However, among the Aryan community, the earliest traces of separate property of women, known as bride price, can be perceived. Bride price means जैसे शादी हुई, शादी हो रही है, उस समय husband used to give कुछ amount to the family of the girl and कुछ amount to the bride. After bride gets married, कुछ amount to her. That was the amount, that was the thing which she kept. That was the property which was called her own property, except that there was no other property. So that was the property which she enjoyed separately and kept it apart from her husband. Post-Vedic time, before we reach that post-Vedic time, there is a quote which is stated by Manu. आपने काफी मनु के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा. Manu was a thinker. He, in his Manu Simriti, stated that a wife, a son, and a slave, these three are declared to have no property. The wealth they earn is acquired for him to whom they belong. तो वैदिक टाइम के बाद जब वेदास आए, ऋग्वेदा, साम, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेदास श्रुतिस के फॉर्म में आए. किसी ने सुनाया उनके बच्चों से, आगे आगे वेदों में जो कहा गया तो बच्चों ने सुना, तो आगे ऋषि मुनियों ने. ये मनु भी ऋषि थे. he was a sage, they were the thinkers, they were the philosophers of that time. So इन्होंने जो अपना परसीव किया, इन्होंने वो स्मृतियों में लिखा के उस समय लॉ का क्या स्टेटस था, उस समय विमेन का क्या स्टेटस था, उस समय एक आदमी का क्या स्टेटस था. Now talking about the post-Vedic age, well, slow changes were made in the position of women after the Vedic age. Property rights were unrecognized, but the only exception being in favor of marriage gifts of movable property. अगर एक औरत को मूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दी जाती है, जैसे ज्वेलरी, उसका कोई ऑर्नामेंट उसको दिया जाता है, कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी दी जाती है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी पे उसका हक बताना शुरू कर दिया गया कि ये भाई इसकी प्रॉपर्टी है. सो जब मनु ने ये स्टेटमेंट दी कि एक औरत एक स्लेव है, उसने इक्वेट किया कि एक औरत एक प्रॉपर्टी है. कैसे? एक जैसे एक स्लेव जो आपका करिंदा है वो आपकी एक प्रॉपर्टी है, वैसे ही एक औरत भी प्रॉपर्टी है. क्यों? क्योंकि वाइफ के पास उस समय कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं थी अपार्ट फ्रॉम द हस्बैंड. शी हैड नो राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड.
फिर स्मृतिज का टाइम आया, मनु स्मृति, यज्ञवालिक्य, नारदा स्मृति, ये अलग अलग टाइम पे हुए। और जब भी ये हुए तो इन्होंने अलग अलग राइट्स दिए। मनु ने कम राइट्स दिए, यज्ञवालिक्य ने थोड़े ज्यादा राइट्स दिए, नारदा ने उससे भी ज्यादा राइट्स दिए। दिस पीरियड विटनेस कन्फर्मेंट्स ऑफ सम राइट्स ऑन द फीमेल्स। अब स्मृतिकार्स जो था गौतम के और मनु का टाइम, जो 5th and 3rd century BC में, they acknowledged the concept of ownership which they called स्त्रीधन, a woman's exclusive property, स्त्रीधन। ये आज के दिन में भी आप कई बार सुनते हैं ये टर्म स्त्रीधन, जहां पे विमेन का एक्सक्लूसिव राइट है उस प्रॉपर्टी पे। There is ample evidence to support that women were capable of owning the property, but theory और practice में बहुत फर्क था। She could not dispose of the property. She was capable of owning, but वो बेच नहीं सकती थी, वो सिर्फ उसका यूज कर सकती थी। उस टाइम पे जो विडोज थी, डॉटर्स थी, मदर थी, they were expressly recognized as heirs, कि वो उनको प्रॉपर्टी मिलेगी, बट उनपे बहुत सख्त कंडीशंस ऑफ चेस्टिटी एंड रीमैरिज, कि अगर वो और शादी कर लेती है उससे प्रॉपर्टी ले ली जाती। अगर वो अपनी सपोज करो शी इज अ विडो एंड शी स्टार्ट्स हैविंग रिलेशंस आउट ऑफ मैरिज, उससे प्रॉपर्टी ले ली जाती थी। तो बट प्रॉपर्टी सिर्फ यूज करने का उसको राइट था, लिमिटेड ओनरशिप थी, एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं थी। थोड़े टाइम के मतलब सिर्फ अपने जीते जी यूज करे, उसके बाद वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी प्रॉपर्टी। फिर टाइम आया जब भी हम कहेंगे कि मिडल एजेस आई, मिडल एजेस आने के बाद ये चीजें भी उससे ले ली गई। मिडल एज आई, मुगल राज आया, उससे जो कुछ कुछ राइट्स दिए गए थे वो भी खत्म होने शुरू हो गए। काफी तक खत्म होने के बाद दोबारा से रिफॉर्म शुरू हुए। अगर आप देखें राजा राम मोहन रॉय, ही वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मिस्ट, तो उन्होंने भी उस समय सती प्रोहिबिशन, विडो रीमैरिज की बातें की। अब क्या हुआ कि सती सिस्टम आया ही क्यों? सती सिस्टम आया ही इस वजह से क्योंकि एक विडो को जैसे ही हस्बैंड की डेथ हुई, विडो हैड नो राइट ओवर द प्रॉपर्टी वाज शेयर्ड बाय द मेल्स इन द फैमिली। उसका सर्वाइवल मुश्किल हो गया। इसी वजह से दे यूज्ड टू गिव देमसेल्फ टू पायर ऑफ द हस्बैंड, कि अब मेरा जीना क्या है, आई विल डाई अलोंग विद हिम, बिकॉज मेरा तो सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल है, राइट? सो I will here first of all discuss about the pre-independence era, pre-independence and then post-independence. So pre-independence may we see that there were two types of property for female, स्त्रीधन और नॉन स्त्रीधन। अब स्त्रीधन जो प्रॉपर्टी थी, वो स्त्रीधन क्या है? स्त्रीधन वो प्रॉपर्टी है, ओके देखिए, स्त्रीधन में भी आगे दो हैं, वो बाद में मैं डिस्कस करूंगी। स्त्रीधन वो प्रॉपर्टी है जो एक औरत को गिफ्ट में मिलती है अपने पेरेंट्स से, अपने हस्बैंड से या रिलेटिव्स एट द टाइम ऑफ मैरिज और ऑन एनी अदर ओकेजन। वो मान लिया गया कि वो स्त्रीधन है, या उसने अपनी किसी स्किल से, दो उस समय women were not allowed to work for themselves, they were not allowed to go and earn livelihood, but फिर भी अगर उसको अपनी स्किल से कोई प्रॉपर्टी मिली है तो उसको स्त्रीधन मान लिया जाता था। और नॉन स्त्रीधन प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी थी जो उसको इनहेरिटेंस से मिली है, सक्सेशन से मिली है। मान लीजिए जैसे फादर की डेथ हुई है तो फादर ने विल में कुछ प्रॉपर्टी लिख दी है, क्योंकि उस समय शी नेवर यूज्ड टू सक्सीड टू द प्रॉपर्टी बाय नेचुरल सक्सेशन, बट अगर किसी ने
मरते हुए किसी विल में या अपनी मर्जी से किसी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में दे दी है, तो वो प्रॉपर्टी होती थी नॉन स्त्रीधन प्रॉपर्टी। सो आगे अगर हम देखें, स्त्रीधन के भी 2 पॉइंट्स हैं, 2 डिमार्केशंस है, सौदायका एंड नॉन सौदायका। अब सौदायका प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी थी जो एक औरत को गिफ्ट में मिलती थी फ्रॉम हर पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड हस्बैंड, और उस प्रॉपर्टी ओनली सौदायका पे उसका फुल ओनरशिप राइट था। बट अगर उसको कोई प्रॉपर्टी स्ट्रेंजर से मिली है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि स्त्रीधन में वो चीज भी आती है कि अगर शादी में माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों के अलावा भी अगर कोई दोस्त मित्र आपको कोई प्रॉपर्टी देता है एट द टाइम ऑफ मैरिज, दैट कॉन्स्टिट्यूटेड स्त्रीधन, बट वो नॉन सौदायका प्रॉपर्टी थी, गिफ्ट बाय स्ट्रेंजर्स, और अपनी मेहनत से कुछ कमाई गई प्रॉपर्टी जो है वो नॉन सौदायका थी। अब नॉन सौदायका में इफ मैरिड वुमन had that property, she did not have the right to alienate that property without the husband's consent. सिर्फ जो सौदायका है, जो गिफ्ट उसको मिले हैं, अपने इन लॉज से मिले हैं, अपने पेरेंट्स से मिले हैं या रिलेटिव से मिले हैं, बस उसी पे ही फुल ओनरशिप। और वो चीजें ज्यादातर आपके गहने होते थे, कपड़े होते थे, या कुछ बर्तन, कुछ महंगे सिल्वर के बर्तन, ये चीजें। लैंडेड प्रॉपर्टीज या हाउस प्रॉपर्टीज, ऐसे हाउस एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये चीजें तो मिलती ही नहीं थी। सो उस पे फुल ओनरशिप राइट उसका नहीं था। अब when we are talking about this non sodayika, this is also called women's estate. Here, as I told you, she was a limited owner. She is the owner, she has the capacity to own it, but she cannot alienate it. वो बेच नहीं सकती थी, बिना हस्बैंड के कंसेंट के वो बेच नहीं सकती थी, अपनी मर्जी उसमें चला नहीं सकती थी। So her responsibility, it was considered that her responsibility is on men, and on the death of the husband, जो सारी फैमिली के आदमी थे, they took the property, क्योंकि हम भाई हैं, on the concept of survivorship, ऑन द डॉक्ट्रीन ऑफ सर्वाइवरशिप के हम भाई हैं, प्रॉपर्टी हम लेंगे, उन्हीं को मिलती थी। बट सिर्फ उसका ये था कि हाँ, घर में उसको एक कोने में जगह मिल जाती थी, उसका वो राइट था कि शी हैड राइट टू मेंटेनेंस एंड शी हैड राइट टू रेजिडेंस। शी हैड नो राइट टू क्लेम द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, ओनर्स वर मेल्स। एंड ये चीज में क्या हुआ कि the widows, they were left in doldrums, उनके लिए रहने को कोई जगह नहीं, बहुत ही पिटिएबल कंडीशन थी। तभी विडो रीमैरिज एक्ट आया। बट विडो रीमैरिज एक्ट आने से कुछ और नुकसान हुए। ये नुकसान हुए कि अगर तू रीमैरिज कर लेती है तो तेरा कोई हक अपने मरे हुए हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। सो वो इन टर्न कोई इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं किया विडो रीमैरिज एक्ट ने। बट नो डाउट इट वाज अ गुड लेजिस्लेशन, इट वाज अ मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स वुमेन इमेंसिपेशन। So to convert the liability of maintenance, कि maintenance का right इसको होना चाहिए, ये responsibility from men folk से, she should have the right over the property, तो ये act आया, Hindu Women's Right to Property Act 1937। अब ये जो एक्ट आया, इसमें क्या किया गया कि विडो जो है वो इनहेरिट कर सकती है प्रॉपर्टी। पहले क्या था कि अगर उसका बच्चा है तो उसको शेयर मिल जाएगा, ठीक है, और वो उसके साथ रहती जाएगी, उसकी जिंदगी चलो पूरी हो जाएगी। बट अगर इशूलेस है, एक
विडो हो गई बट उसका बच्चा नहीं है, तो उसको तो सर्वाइवल ही मुश्किल हो गया। इसीलिए दे स्टेटेड कि अब इस एक्ट में विडो वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड, बट शी विल हैव जस्ट लिमिटेड ओनरशिप ओवर दैट प्रॉपर्टी। मतलब कि वो रह सकती है, खा सकती है, पी सकती है, उसको घर से निकाल नहीं सकते हैं, बट वो बेच नहीं सकती, वो किसी को आगे दे नहीं सकती। उसके मरने के बाद जो पीछे आदमी रह गए हैं जिनको वो मिलना है, वो उनको वापस मिलेगा। वो उसके भाई, उसके फादर, जो आदमी के भाई फादर्स हैं, बाय डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप प्रॉपर्टी उनके पास जाएगी। सो this act just gave legislative recognition of the right of the widow, but it did not radically depart from the old law. She wasn't a co-partner. अब co-partner क्या है वो चलो मैं आगे आपको समझाऊंगी। Now let's come to the post independence era. पोस्ट इंडिपेंडेंस, अब जब आजादी मिल गई, आजादी मिलने पे जब हम लॉज बना रहे थे इस कंट्री के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठ के लॉज बना रही थी, तो काफी इस पे गहमा गहमी डिस्कशन हुई, गिविंग प्रॉपर्टी राइट्स टू वुमेन। अगर देखा जाए तो हमें इंडिपेंडेंस के बाद ये 60 साल हुए हैं, कह ले हम 56 में मिला ये राइट, 60 साल के करीब का टाइम हुआ है जब ही एक औरत को एब्सोल्यूट ओनरशिप राइट मिला। क्यों? क्योंकि जब ये लॉज बना रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी and Dr. Ambedkar, they were the ones that, yes, women should be given absolute ownership over the property, but there was stiff opposition by the conservatives. They stated that Hindu religion is being endangered because वैदिक टाइम में भी, पोस्ट वैदिक टाइम में भी, हमारे हिंदू ट्रेडिशन में भी है कि औरतों को प्रॉपर्टी नहीं देनी है, औरतों का कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी पे, बट आप कह रहे हो एब्सोल्यूट ओनरशिप देनी है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरा, दे स्टेटेड दैट आवर कल्चर इज सन सेंट्रिक, आवर इकोनॉमी इज सन centric economy, and that's the basic principle of Hinduism. We cannot depart from that concept, but it was a miracle that firm steps were taken by legislature to correct the imbalance between males and females in the area of property rights. So जब भी प्रॉपर्टी राइट्स आए, वो बेस था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 15(3) में क्या लिखा गया है कि nothing in this article shall prevent the state from making any special provisions for women and children. So इसी तहत ही स्पेशल प्रोविजंस बनाने शुरू कर दिए गए औरतों के लिए। जो हम कहते हैं ना कि ये तो देखो जी, एक औरत को स्पेशल बेनिफिट दिया जा रहा है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया और क्रुएलिटी के कुछ सेक्शंस हो गए, ठीक है, एंड बायगमी के सेक्शंस हैं या कोई और सेक्शंस भी हैं क्रिमिनल लॉ में कि स्पेशल लेजिस्लेशंस औरतों को दी गई जिनमें औरतों को बेनिफिट हो रहा है, आदमी को बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो ये ही आर्टिकल है जिसके तहत लॉज बनाए गए और सेक्शन 14 इंट्रोड्यूस किया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट में। अब सेक्शन 14 क्या कहता है कि एक औरत को अगर प्रॉपर्टी मिलती है, दैट शी विल बिकम द एब्सोल्यूट property, she will become the absolute owner of that property. कहने का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी उसको मिले, कहीं रिलेटिव से मिले, कहीं स्ट्रेंजर से मिले, कहीं से भी, चाहे उसकी मेहनत की प्रॉपर्टी है, उस पे उसका पूरा हक है। पूरे का मतलब ये है कि वो उसको बेच सकती है, उसको चाहे आग लगाए, कुछ भी लगाए, किसी का कोई उसमें लेना देना नहीं है। शी इज नाउ द ओनर, क्योंकि प्रीवियसली शी कुड नॉट डू एनीथिंग विद द प्रॉपर्टी, शी हैड नो ओनरशिप राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी। फर्दर सेक्शन 6, अब ये चीज है जो
2005 से पहले की ये टाइम पीरियड है, वो बता रही हूं कि सेक्शन 6 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसमें क्या लिखा गया? उसमें ये लिखा गया कि अगर एक आदमी मर जाता है, ठीक है, आदमी मर जाता है तो लीविंग बिहाइंड अ फीमेल, सपोज वो उसकी वाइफ है जिंदा, या उसकी मदर जिंदा है, या बेटी जिंदा है, क्लास 1 में ये लोग आते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी का शेयर shall pass on by rules of interstate succession and not by doctrine of survivorship. चलो ये थोड़ा टेक्निकल है, बट इसको मैं थोड़ा इजी फॉर्म में आपको समझाऊंगी कि 1956 का जो एक्ट आया सक्सेशन का, उसमें ये बोला गया कि भाई औरत एक एब्सोल्यूट ओनर है, औरत को कोई प्रॉपर्टी कहीं से मिलती है, उसका हक है वो उसको यूज करे, उसको आगे किसी को बेचे, उसको खाए पिए एंजॉय करे, रेंट पे दे, जो मर्जी करे, ठीक है। बट जो उसके फादर की जद्दी प्रॉपर्टी है, उस पे उसका हक नहीं है। जद्दी प्रॉपर्टी पे जो है, जद्दी प्रॉपर्टी, अगर एक सपोज एक फैमिली में एक फादर है और उसके चलो बच्चे हैं 2, लड़का और लड़की, ठीक है, फादर है, लड़का है, लड़की है, फादर के 2 भाई हैं, तो जद्दी प्रॉपर्टी में क्या होता था कि अगर आदमी मर गया, उसका शेयर जो जद्दी प्रॉपर्टी का है, पहले भाइयों में सारा वो शेयर जाएगा, भाइयों में गया तो एक शेयर, 2 भाई हैं, तीसरा शेयर उस आदमी के नाम पे आया, क्योंकि उसके पास बेटी है, जैसे इसमें लिखा है फीमेल इन क्लास 1, उसके पास बेटी है, तो उसका शेयर निकल आया, एक शेयर। जद्दी प्रॉपर्टी में 3 भाइयों में से एक शेयर उसका आ गया। वो जो एक शेयर है, ठीक है, वो अच्छा, वो फादर को मिला, वो सन का भी चौथा शेयर होगा उसमें, क्योंकि हिंदू कल्चर में ये चीज है, मिताक्षरा लॉ में ये चीज है, रादर आई वुड से, कि बेटे का जैसे ही जन्म हुआ तो बेटे का जद्दी प्रॉपर्टी पे हक हो गया, बेटी का नहीं होता था। 2005 से पहले की बात बता रही हूं, तो जद्दी प्रॉपर्टी पे बेटे का हक हो गया। अब मान लीजिए एक बेटा है, 3 भाई हैं, तो 3 भाई में से फादर, एक भाई मर जाता है, तो उस जद्दी प्रॉपर्टी के 4 शेयर बनेंगे, एक बेटे को मिलेगा, एक फादर को, एक इधर एक इधर, वो मिल गया। उसके बाद जो फादर का शेयर है, फिर वो जो एक शेयर वो फादर का बना ना, वो ही आधा बेटे को जाएगा, आधा बेटी को जाएगा। सो ऐसे अगर आप देखें तो बेटे का शेयर 1956 के बाद भी बेटे का शेयर ज्यादा होता था बेटी के कंपैरेटिवली। बेटी को एक शेयर मिलता था, बेटे को 2 शेयर मिलते थे, एक तो बीइंग अ सन एंड टेकिंग बर्थ इन द फैमिली, और दूसरा बीइंग द चाइल्ड ऑफ दैट man. So that was the difference which was removed in Hindu Succession Act 1956, that is post 2005. 2005 के बाद क्या किया गया, ये को-पार्टनर, जो मैं आपको वर्ड बोल रही थी, को-पार्टनर मीन्स हमारे हिंदू कल्चर में जो लोग कहा जाता है कि जो पिंडदान देते हैं, पिंडदान, एक आदमी मरता है, एक आदमी के मरने पे किसका पिंडदान लगता है, तो वो माना जाता है कि उस आदमी की 3 पुश्तें, उस आदमी की नीचे से 3 पुश्तें जो हैं उनका पिंडदान लगेगा, औरों का नहीं लगेगा। सो ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके बाद ग्रैंडफादर, उसके बाद फादर, उसके बाद सन, ये जो है ये को-पार्टनर्स हैं। ये उस कहने का मतलब है, अगर जो सन है वो पिंडदान दे सकता है, उसका पिंडदान का बेनिफिट होगा अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को, इसलिए उसका हक बन जाता है प्रॉपर्टी पे। जैसे ही वो जन्म लेता है, उसका अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी पे हक बन जाता है, तो उसको कहते हैं को-पार्टनर। अब 2005 पहले लड़की को पार्टनर नहीं थी, क्योंकि लड़की का
पिंड दान माना ही नहीं जाता। आपने भी देखा है कि हमेशा अगर अर्थी को कोई अग्नि देता है तो वो लड़का ही होता है, ठीक है, या भाई होता है, बेटी नहीं देती थी। बट ये काफी इनइक्वालिटी का पॉइंट आया, ये काफी there was lots and lots of agitation by the women activists, and not only women activists, by the legal fraternity also, that there is discrimination. 15 section 15 sorry article 15 constitution का कहता है कि there should be prohibition of discrimination on the basis of sex, कास्ट, क्रीड, वो तो है, ये सेक्स की बात मैं कर रही हूँ कि मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो उस तहत 2005 का लॉ बनाया गया कि जहां पे बराबर का हक दिया गया बेटी को। अब बेटी भी को पार्टनर है। अब जैसे प्रॉपर्टी बेटा लेता था वैसे ही बेटी है। अब बराबर का हिस्सा बेटी का भी होगा और बेटे का भी होगा। दैट इज द सिचुएशन आफ्टर 2005। 2005 में मेजर अमेंडमेंट आई जिसमें उसको को पार्टनर, अब जद्दी प्रॉपर्टी पे भी और एक आदमी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे भी बेटी का बराबर का हक है जैसे बेटे का होता था, राइट। अब इसके कई इम्प्लीकेशंस हैं। एज अ टोल्ड यू, को पार्टनर बन गई, ठीक है, 2005 के आने के लॉ के आने के बाद वो को पार्टनर बन गई बराबर। अब को पार्टनर्स के क्या फंक्शंस हैं, को पार्टनर्स के क्या राइट हैं। अब हम देखें तो फैमिली में हम अपनी जॉइंट फैमिली ले लें, दादा परदादा बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, तो उसमें हम कहते हैं जो परदाता है कि वो कर्ता ऑफ द फैमिली है। परदादा, दादा, फादर, सन, दे आर ऑल को पार्टनर्स, ठीक है। तो 2005 से पहले के कॉन्सेप्ट में क्या था कि अगर कर्ता कौन है, कर्ता धर्ता कहते हैं ना हम, कि ये फैमिली चलाते हैं, ये सारा फैमिली को मैनेज करते हैं। सो कर्ता जो है आदमी हुआ करता था। अब क्या है, क्योंकि औरत एक को पार्टनर भी बन गई है, उसको बराबर का हक है, सो एक बेटी भी कर्ता बन सकती है। दिस इज द इम्प्लीकेशन आफ्टर 2005। अब एक मैरिड वुमन की बात, ठीक है, एक लड़की अनमैरिड है, वो अपनी फैमिली की कर्ता बन गई। सपोज करें उसके फादर हैं, फीबल हैं, वो ठीक नहीं रहते हैं, वो बीमार है, उसका भाई है, वो भाई मान लीजिए अब्रॉड रह रहा है, तो बेटी उनके साथ रह रही है, मदर है, तो बेटी आराम से कर्ता बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट नाउ व्हेन दैट डॉटर इज मैरिड, अब मैरिज के बाद उसकी डुअल मेंबरशिप हो गई। फादर हस्बैंड की फैमिली में शी इज मेंबर ऑफ अ जॉइंट फैमिली, बीइंग a part of the joint family, though she is not karta of the husband's family, but she is member of the joint family, right? इधर भी अपनी फादर की फैमिली में भी वो मेंबर बन गई है, so dual membership मिल गई है। Now she inherits as co-partner from father's side. अगर फादर की साइड में कोई डेथ होती है तो उसको प्रॉपर्टी का शेयर एज अ को-पार्टनर मिलेगा। और दूसरी तरफ से इन लॉज की तरफ से भी अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसको शेयर मिलेगा। अगर मान लीजिए उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, होने के बाद उसके फादर इन लॉ की डेथ होती है, तो बीइंग अ विडो ऑफ हर being the widow of her husband, of the son of that father-in-law, she will inherit the property from the father-in-law also. So वो दोनों तरफ से प्रॉपर्टी ले रही है, पेरेंटल साइड से भी प्रॉपर्टी ले रही है एज अ को पार्टनर, एंड इधर से भी प्रॉपर्टी ले रही है एज अ जॉइंट फैमिली मेंबर। सो शी कैन बी, नाउ अगेन शी कैन भी कर्ता। अब उधर भी कर्ता का रोल, मान लीजिए एज आई टोल्ड यू कि वो बहन है, फादर है, मदर है, और भी हैं फैमिली में, बट दे आर नॉट केपेबल, शी इज केपेबल, सो वो कर्ता भी एज her father's family, in her father's family she can be karta, और साथ में as a member of a joint family of a husband. Here
I come to this conclusion that there is creation of inequality to remove the inequality. Now see, she is inheriting from both sides. She is inheriting from the co-partner, from the father's side as a co-partner. ठीक है, इनहेरिट पहले भी करती थी, बट पहले सेपरेट प्रॉपर्टी करती है. अब क्या को पार्टनर बनने से वो जद्दी प्रॉपर्टी भी इनहेरिट कर रही है, कर्ता के भी उसके पास राइट्स आ गए जो उसके पास 2000 पहले से नहीं थे. कर्ता धर्ता भी उस घर की बन सकती है और इधर से भी वो इनहेरिट कर रही. जबकि एक आदमी जो है वो सिर्फ एक तरफ से अपने ही घर से इनहेरिट कर रहा है, अपने इन लॉज की तरफ से वो इनहेरिट नहीं कर रहा, क्योंकि इनहेरिटेंस के लॉज जो हैं वो अलग हैं, फॉर मेल्स अलग हैं. अगर मान लीजिए हस्बैंड, हम कहते हैं हस्बैंड की डेथ होती है तो उसके लीगल एयर्स कौन है? उसके लीगल एयर उसकी वाइफ है, उसकी मदर है, उसके बच्चे हैं, और भी हैं, देयर आर 16 इन क्लास 1, बट ये मेजरली अगर देखा जाए कि उसके पास एक मदर भी, फादर नहीं है, मदर है, वाइफ है, चिल्ड्रन है, ठीक है, दे विल इनहेरिट. बट अगर वाइफ मरती है, मान लीजिए वाइफ मरती है, तो उसका सक्सेशन जो है, उसका सक्सेशन डिपेंड करेगा कि वो उसको प्रॉपर्टी कहां से आई. अगर उसको अपने माँ बाप से प्रॉपर्टी आई और उसके बच्चे नहीं है, दो चीजें देखी जाएंगी. फीमेल अगर मरती है तो उसका सक्सेशन कैसे होगा, देखा जाएगा उसके बच्चे हैं या नहीं. अगर उसके बच्चे हैं तो हस्बैंड को और बच्चों को शेयर मिलेगा. अगर मान लीजिए उसके बच्चे नहीं हैं तो नेक्स्ट स्टेप ये देखने का होगा कि उसको प्रॉपर्टी आई कहां से. ये प्रॉपर्टी उसकी खुद की कमाई है, अगर तो खुद की कमाई है तो हस्बैंड को मिलेगी. अगर ये उसके माँ बाप से आई है तो वो प्रॉपर्टी हस्बैंड का शेयर उसमें नहीं होगा. जो लीगल एयर्स ऑफ हर फादर होंगे उनको वो प्रॉपर्टी मिलेगी. That is the law of succession of females. So this has created inequality, I would say, to bring equality. Equality का concept लाने के चक्कर में अब inequality दूसरी तरफ हो गई. It is inequality towards the male members of the society, right? But still, law has come a long way to bring property rights to women. And property rights are very important for any society. Even George Washington has stated that in case you're talking about the freedom and property rights are inseparable. You can't have one without the other. अगर आप कहो मेरे को freedom चाहिए, but freedom के साथ आपको property के rights नहीं है, तो that is no freedom at all. Thank you so much for patiently hearing to my long lecture. I'm happy, and in case you have any questions, so I am ready for the questions, please. So all the participants, अगर किसी की कोई query है तो आप unmute कर सकते हैं और direct पूछ सकते हैं. Hello. Ma'am, I have questions. Yes, please. Yes. There are in fact one or two, in fact more than that, Okay. but I'll come up one by one. Right. Ma'am, my first question is like, it's not basically a question, it's like I'm contemplating over the thing. When Martin Luther King, right, he came up with his Emancipation and Proclamation. He basically, took into consideration the blacks and the whites, right? He majorly, proposed, for the black people, right? Right. But when it comes to India, I am basically focusing upon not only the racist people, but at the same time, the marginalized ones. Right. So what is your take on whether in the, ancient scriptures till date, is it anything which is written for the safeguarding of their properties, especially the marginalized people?
सी फॉर द मार्जिनलाइज, यू नो, हम अगर हम अपना वैदिक कल्चर देखें तो वैदिक कल्चर में वो ब्राह्मणिज्म आया, ठीक है ना। वो आप पता है आपको कि कास्ट सिस्टम तभी ओरिजिनेट हुआ। अब जैसे ही कास्ट सिस्टम ओरिजिनेट हुआ तो यू नो कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, तो फिर विमेन और उनको तो स्लेव्स की तरह ही मान लिया गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी तो उनसे ले लिया गया। सो उनमें भी तब भी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी विमेन को भी एट पार ही लिया गया कि दे वर देमसेल्व्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैन, एंड दैट मैन ऑब्वियसली वाज ऑफ द अपर कास्ट। तो दैट हैज कम अ लॉन्ग वे नाउ। अब उसमें भी चेंजेस आए हैं। दैट टू हैज बिन अभी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर विमेन के राइट्स बनाने को कहा तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मार्जिनलाइज सेक्शन के राइट्स को भी अपहोल्ड करने में और न्यू लेजिस्लेशंस अपहोल्ड करने में कहा है। तो बाद में ही ये चेंजेस आई हैं। सो दैट वाज वेरी मच देयर। Okay. Ma'am, my second question is, we as a women, we carry the womb of universe, right? We are in the age of serendipity. But at the same time, ma'am, we as a women, we go through so many, problems, personal problems, especially the physical problems. Most importantly, I'm talking about the menstruation cycle, Yes. right? If we as a women are not treated in that good way, I would say, during the menstruation cycle, we are not allowed to go into the kitchen, we're not going to allowed to go into the puja room and everything. So if this is happening in this very personal and physical level, don't you think this property rights is a way far ahead, which I don't think it's reachable? What's your take? Yeah. See, I agree with you. देखिए, कस्टम था कि एक औरतों को किचन में नहीं जाना देना चाहिए जब भी शी इज अंडर हर मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड. दैट कस्टम, when it started, I am very sure it started on a good note. क्यों? क्योंकि उस समय जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जिसमें बहुत ज्यादा बर्डन, बहू पे बहुत ज्यादा बर्डन हुआ करता था कि तुमने काम करना है. तो मे बी द कस्टम व्हेन इट स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट कि उसको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा. शी विल बी अलाउड टू रिलैक्स इन दोज टाइम पीरियड बिकॉज शी इज नॉट फिजिकली केपेबल इनफ इन दोज टाइम पीरियड्स. कभी आप सावन की भी बात, सास का मुंह नहीं देखना, क्योंकि लड़की को छुट्टी नहीं मिलती थी, ठीक है. लड़कियों को छुट्टी नहीं मिलती थी, बहुओं को छुट्टी नहीं मिलती थी, सारा साल इतना काम करना, तो सास के मुंह नहीं लगना सावन में, इसको इसके घर पे छोड़ा, ठीक है. सो वो दे वर द फॉर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन. बट लेटर ऑन ये कस्टम्स को ऐसे डीजेनरेट कर दिया कि दे बिकेम रादर शैकल्स इन द लेग्स, इन द फीट ऑफ विमेन. ठीक है, आपकी बात सही है, बट द पॉइंट इज लॉज. देखिए, अगर आप देखो, लॉ बनाने का फायदा भी है. हम कहते हैं कि ठीक है, माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होता तब तक कुछ नहीं कोई कर सकता. जैसे आपने कहा कि ये किचन में आज ये दूर के सपने लगते हैं प्रॉपर्टी राइट्स. आई एग्री, माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है, बट ये लॉज कहीं ना कहीं माइंडसेट भी चेंज करते हैं. दूसरा, ये लॉज आने से इमेंसिपेशन हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें, women were not represented properly in the parliament, in the administration, in the political sphere. जब भी एक औरत की रिजर्वेशन शुरू की उन्होंने, फीमेल रिजर्वेशन इन पॉलिटिकल स्फीयर जब भी शुरू की, तो क्या हुआ? पंचायतें देख लो, औरतें सरपंच बनी, बट दे वर रबर स्टैम्प्स. आई एग्री, दे वर रबर स्टैम्प्स. मेल्स वर डोमिनेटिंग, औरत को एक रबर स्टैम्प की तरह यूज किया. बट रिजर्वेशन आने के बाद ये देखिए आप, एक बार रबर स्टैम्प, वही औरत 5 साल के बाद बोलने लगी, भाई मैं रबर स्टैम्प क्यों बनूं?
मैं तो अपना राइट सेंचुएट करूंगी। मोर रिप्रेजेंटेशन बढ़ी, पहले मिनिस्क्यूल रिप्रेजेंटेशन थी, अब 40% रिप्रेजेंटेशन होने लग गई है। सो लॉस समवेयर दे ब्रिंग दैट इमेंसिपेशन। उसका आज आपको फायदा नहीं दिख रहा, बट वो स्लोली एंड स्लोली माइंडसेट चेंज कर रहा है। तो माइंडसेट चेंज होने से सोसाइटी में चेंज आएगा। Okay. And ma'am, my last question. Yes. My last question is like, uh, when men turn out to be promiscuous, or I would say they indulge in any kind of adultery, right? So nobody, try to snatch their property or whatsoever rights they have. But at the same time, when a woman gets indulged in these activities, or maybe they are, defamed by their character. So how is it? How would she safeguard her property? Because it is very easy कि society में बदनाम है तो उसको घर से निकाल दो and everything. तो वो अपनी प्रॉपर्टी को कैसे बचाए? I don't. अब ऐसे है कि मैं आपको बताऊं, जो चेस्टिटी की बात है ये लॉ में पहले थी कि अगर शी इज ऑफ अनचेस्ट बिहेवियर शी विल नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी, बट नाउ इट हैज बीन डन अवे विद। ये 1956 का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट आया उसमें ये चेस्टिटी का क्लॉज फॉर द पर्पस ऑफ सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी वो खत्म कर दिया गया। Now, even if she is of unchaste behavior, she will inherit the property. Even if she remarries after the death of the husband, she will inherit, provided she has remarried after the death. That on the day when the succession opened, on the day when the man died, she was his widow. Even after one day of his death, in case she gets married, she will not be, I would say, it won't impact her succession right? She will still inherit the property of the man. So ये concept, no doubt, chastity लोग बात करेंगे, वो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट रहता है, वो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस, सोसाइटी की बातें रहती हैं, बट लीगली शी स्टिल हैज दैट राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी। Thank you so much, ma'am, principal ma'am. Any other questions? Yes, ma'am. थैंक यू। एंड उस दिन डॉक्टर आशीष आए थे तो वो बात कर रही थी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज रहेंगी, आई थिंक उस दिन कुछ लोग पूछ रहे थे मैम बंगेरा, प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेरीज थी। मैम वो मनदीप मैम की तरफ से थी, शी वाज आस्किंग फॉर हर फ्रेंड। तो मनदीप मैम, वुड यू बी एबल टू? मैं तो क्वेश्चन ही लेना चाह रही थी, और उसमें से जो मुझे थोड़ा ध्यान है, कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि एज ए वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी में राइट अगर डाइवोर्स के इमीडिएटली बाद डाइवोर्स हो जाता है तो उसका कुछ आप बताना चाहेंगी कि इमीडिएटली आफ्टर मैरिज अगर डाइवोर्स हो जाता है तो वाइफ का क्या राइट रहता है हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड जो भी? Okay, see, divorce does not open succession or inheritance. Succession and inheritance happens only on the death of the person. But उसका डिवोर्स हो गया, एक औरत का डिवोर्स हो गया, डिवोर्स होने के बाद उसके क्या राइट्स होंगे over the property? She will have to file a case in the court of law. Maintenance can be claimed under CRPC also. Maintenance can be claimed under Maintenance Act also. तो उसमें कोर्ट के सामने she will provide कि he is the owner of this and this property. अब उसमें एक औरत खुद क्या कमा रही है, औरत की खुद की इकोनॉमिक कंडीशन भी डिसाइड करती है when the court grants maintenance. Is she capable to maintain herself? No doubt
There have been so much litigation whereby the court has also given the right कि औरत जो अपने घर में, मान लीजिए अपने parental house में उसकी position, she was not financially very sound, the family was not sound, but later on she got married in a rich family where the man was earning so much, he had a very a good business, profitable business, and she became attuned to the luxuries of the life of the man. After that she gets divorced. Now she can claim that kind of life, right? She is liable to claim, and it is now on the court to see and grant her the maintenance. कुछ cases में अगर आप देखें तो per month लाख लाख रुपया दिया जा रहा है, 1.5 लाख रुपया भी दिया जा रहा है, और पर मंथ 2,000 रुपया भी दिया जा रहा है. It totally depends upon the economic position of the man. बट प्रॉपर्टी पे कोई राइट्स नहीं होते डिवोर्स के बाद, वो डेथ के बाद ही फिजिकल प्रॉपर्टी पे. हाँ, डिसाइड हो सकता है मेंटेनेंस प्रोसीजर के दौरान, कोर्ट कह सकता है आप ये वाली प्रॉपर्टी इसको दे दो इन ल्यू ऑफ मेंटेनेंस, कि एक ही बार में कंप्लीट मेंटेनेंस खत्म करो, मंथ का मेंटेनेंस नहीं देना, बट ये वाला घर जो है आपका दिल्ली वाला घर है, आप इसके नाम कर दें. That could be given. That is the discretion of the court. Ma'am, I have a question. What about the child? Will the child be able to claim, have a claim in the property? चाइल्ड का तो क्लेम रहेगा. देखो, क्लेम रहेगा. जैसे फादर की डेथ होती है, डिवोर्स्ड वाइफ का कोई राइट नहीं है, बच्चे का राइट है. Okay, and ma'am, even if the husband gets into a second marriage, yes, even after that, yes, the child will get. Children will get. But only after 18 years. No, not only on the death of the man. Only on the death. मतलब still बच्चे क्लेम मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं टिल द एज ऑफ 18. बच्चे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, लड़कियां मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है 18 के बाद भी, इन केस शी इज नॉट एबल टू survive on her own, she has no source of income, or she is disabled. बच्चे जो disabled हैं वो फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं. बट जहां पे हम सक्सेशन की बात कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है कि हम मिक्स कर रहे हैं दो चीजों को. एक मिक्स कर रहे हैं कि डिवोर्स के बाद ये उसके प्रॉपर्टी पे राइट्स बन जाते. प्रॉपर्टी पे राइट कोई नहीं बनता, राइट बनता है डेथ के बाद. Okay. ठीक है, डेथ हो जाती है हस्बैंड की, वाइफ इज डिवोर्स्ड, wife will not get any share, but the children will get their share. It would be like a wife है ही नहीं. ठीक है, जो वाइफ है, वाइफ की डेफिनेशन में does not include divorced wife. Wife does not include divorced wife. So वाइफ वो नहीं रहे, वाइफ को नहीं शेयर मिलेगा, बच्चों को मिलेगा. Ma'am, this I is have a actually question. my personal question, since I'm a single mother right now. Okay. And you know, my husband, my ex, in fact, he got remarried. Okay. So this is what I'm asking, whether my child, Your child will inherit his property, yes. even after the paperwork and everything is done from my side. हाँ, पेपरवर्क कुछ नहीं. पेपरवर्क में देखो, सक्सेशन का जो राइट है वो उसका स्टैट्यूटरी राइट है. आदमी की डेथ के बाद बच्चों को वो हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा. Okay. हाँ, इवन इफ ही रीमैरीज, वो उसकी वो वाली वाइफ को मिलेगा, उसके बच्चों को भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा. Okay, thank you. Thank you so I much. think someone from Excuse me, ma'am. Yes, ma'am, I have a Mandeep question. was asking something. Yes, मैम जैसे हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स हो गया, तो बच्चे को मेंटेनेंस कितने टाइम तक मिलेगा, या वाइफ को कितने साल तक मेंटेनेंस मिलेगा? देखो, बच्चे को मेंटेनेंस मिलेगा टिल द एज ऑफ 18 इफ इट्स अ बॉय. ठीक है, लड़की इनकेस बेटी है तो बेटी अगर she is, because अभी भी वो situation है where girls are not economically sound, or they are not considered in that respect. They are considered the responsibility of the father and the mother. So father, but
if it is proved in the court of law that she is not able to survive on her own, or mother is not able to make her has those source of income, she can claim maintenance. ठीक है, डिसेबल्ड बच्चे को भी तय उम्र मिलेगा, वाइफ को भी तय उम्र मिलेगा, in case she is able to prove that she has no other source of income. यस मैम, अगर वाइफ जैसे कम कमा रही है तो उस कंडीशन में भी मतलब वाइफ देखो, को कम की डेफिनेशन देखी जाएगी कि कम ये तो नहीं कि आदमी के बराबर, कम कमा रही है बट उसमें उसका गुजारा हो रहा है। अगर तो उसका गुजारा हो रहा है तो कम मेंटेनेंस कोर्ट देगा, अगर उसका गुजारा नहीं हो रहा तो कोर्ट ज्यादा मेंटेनेंस देगा। बच्चों का मेंटेनेंस देता जाएगा, साथ में बच्चों का ऐड करके देता जाएगा टिल द एज ऑफ 18। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, एनी अदर? वेरी गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून वरिंदर जी। मैम ऐसा है कि इट्स द केस ऑफ नियर बाय कि वेयर के फादर हैज स्पेंट lavishly on daughter's marriage, and after the marriage the son-in-law provoke a daughter to claim for the right in the property. So where the positions of the father and the son, they are saying that we have spent lavishly upon your marriage, it's about 5 crore. So but this girl is still insisting on getting the right to property, although I agree to it that she has a right, legal right to get a share, equal share in the property itself. So what is your intake upon that, that she has incurred a lavish amount upon her daughter's marriage? See, देखो, जीते जी क्लेम नहीं ले सकते, ये चीज तो क्लियर करो, ठीक है, कि उसके जीते जी। अब ये हो गया ना, अब देखो, अब को पासनरी का राइट जैसे मिल गया, मान लीजिए, ठीक है। जो जद्दी प्रॉपर्टी है ना, देखो, सेल्फ अक्वायर्ड बंदे के मरने के बाद ही वो क्लेम कर सकती है। जो जद्दी प्रॉपर्टी है जिसमें उन्होंने बंटवारा किया, बंटवारा जो है उसके लिए वो क्लेम कर सकती है, बंटवारे के लिए। जैसे बेटे, आप देखें, एक बिजनेस चल रहा होता है, बेटे भी है, फादर भी है, ठीक है, तो बेटा कहता है मेरा हिस्सा दे दो, वो फादर के जीते जी कहता है, क्योंकि फादर भी उसमें जद्दी प्रॉपर्टी, बच्चे ने जैसे जन्म लिया उसका हिस्सा हो गया, ऐसे ही लड़की का भी हिस्सा हो गया, ठीक है। अब उसमें वो क्लेम कर रही है, दे हैव लेविशली स्पेंट। जो तो फादर की सेपरेट प्रॉपर्टी है उसके लिए वो विल लिख सकता है कि जो मेरा शेयर जद्दी में है, या मेरी जो सेपरेट प्रॉपर्टी है, जो मैंने जैसे कमाया, मैं कॉलेज में काम करता था, मैंने वहां पे जो इनकम ली उससे मैंने घर बनाया, उस पे वो विल बना सकता है कि इस विल, उसमें लिख सकता है कि इसका कोई शेयर नहीं है, इसको मैंने ये दे दिए थे विद इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस, ही कैन मेक अ विल and he can get that will registered. It is very important, though will की registration required नहीं है, जरूरी नहीं है by law, it is not compulsory, but it needs to, registration क्या करती है कि देखो, जिसने will बनाई वो तो रहा नहीं बोलने के लिए मैंने बनाई है, तो कोर्ट को एक ऑथेंटिसिटी, बड़ी आराम से विल टूट जाया करती थी, सो कोर्ट को ऑथेंटिसिटी चाहिए। वो ऑथेंटिसिटी अगर वो रजिस्टर करवा देता है अपनी विल, तो ऑथेंटिक मान ली जाएगी, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो वो कर सकता है, लेकिन जहां पे जद्दी प्रॉपर्टी में वो हिस्सा मांग रही है, वहां पे उसको देना पड़ेगा जद्दी में। समझ गए वरिंदर जी? सिर्फ जद्दी में वो क्लेम कर सकती, दूसरे में वो क्लेम नहीं कर सकती, अपने आदमी के जीते जी वो क्लेम नहीं कर सकती। हाँ, बाद में भी वो क्लेम ना करे, उसके लिए वो विल लिख के चला जाए, ठीक है जी। Any other queries? Okay, I don't think, ma'am, there are certainly any queries, because obviously everything put forward by you was really, we were able to comprehend the things, being a layman in this particular field. Ma'am, Madam Principal has to leave because she has some urgent meeting, but she has, sent her appreciations to you.
and her regards to you. At the same time, we are actually thankful to you to have spared your time from your busy schedule for this resource series, and we really look forward to many more future deliberations with you, and it was wonderful having you on board. It was valuable, worthwhile, and at the same time really acquainting. No, Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It was wonderful to be in presence of you all and settling the queries of everyone. You know, you get to learn more when you have good sort of questions coming forward. You get to learn more. And rather, I'm a facilitator. I'm not a teacher. I'm a facilitator. And I'm also a student in the learning process. Okay. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you.